आता इथून आहे ना 10 किलोमीटर चालायचं आहे. असंच 10 किलोमीटर चालल्यानंतर जस्ट 1 किलोमीटर आधी आपल्याला वॉटरफॉल दिसायला लागेल फ्रॉम द रेल्वे ट्रॅक. समजेल आजची दुःख नाही दिसणार. वॉटरफॉल क्लिअर पाहिजे, मध्ये धुकं आले ना मग मजा जाते. We came from Baga beach. We reached around 10:30 in Kolem, and then we parked our vehicle near Jungle Book Resort. So on the way we met with some of the guides. They said that they will charge around 600 rupees each, and all that will also include the forest department fees. शूज फुल भिजले. गोवा फॉरेस्ट आहे, तिथे आपण एंट्री करतो. हा आमचा गाईड. काय तुमचं नाव? ताजू. So forest guard just told us that around 2500 people came yesterday on 14th August, and today around 700 to 800. बहुत कोशिश की. सुबह लॉन्ग जंप दे. हाँ हाँ. उधर से है क्या? पानी पीता है कुछ. फ्रेश वाटर. रेलवे ट्रैक पे लेके जा रहे हैं, साइलेंट जाने का. It's 12:15 now, and our guide mentioned not to ask when we are reaching till 3 o'clock at least. Basically around 3 to 3:30 we will be reaching on. So path is specially made for all trekkers. The forest guard also mentioned that you cannot trek without a guide. So jeeps कब से start होते हैं? अक्टूबर 15 से जीप्स. और उस टाइम पे ये ट्रैक भी चालू रहेगा क्या? ये ट्रैक भी चलेगा? अभी कोई नहीं आते, आप जीप से चले. हाँ, जीप से ही आ जाएंगे फिर. इंटरेस्टेड है ट्रैकिंग में तभी आएंगे. करेक्ट. अच्छा. और वो उस टाइम जब जीप चालू रहते तो प्राइवेट व्हीकल नहीं ना लेके जा सकते? अच्छा. आपको तो टाइगर दिखा था. टाइगर? रूट पे इधर ही इस बीच में वो टाइगर दिखा था. लोगों पायलट मैं तो लोगों को दिखा क्या कभी ट्रैक के टाइम टाइगर वगैरह लेपर्ड दिखा कुछ? नहीं ना. यहाँ से इस तरफ 10 किलोमीटर दूर, इस तरफ 10 किलोमीटर. पूरे पहाड़ों से नज़दीक में कुछ नहीं, दूर है. क्योंकि बाइक का सब नज़दीक है. नाइट टाइम को ज़्यादा करके लोको पायलट को दिखा. अच्छा. डे में नहीं निकलेगा बाहर हो. सोनालिम से दुधसागर से करंजल के बाद कैसा तो मूवमेंट चालू है. लोग का गुड्स ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन. हाई स्पीड होती है क्या ट्रेन? 30 की स्पीड निकलती. 30 वाली. अच्छा, तो पता चल जाएगा ट्रेन आ रही तो. घाट सेक्शन है ना. हाँ हाँ हाँ.
ओके अरे भैया कहाँ जा रहे हो? ऊपर काल ऊपर भैया वहीं से ऐसे निकाले। आई थिंक वो और लोगों को लेकर काय वाटेल? 13,658 steps. So we have reached Bhagwan Mahavir National Park and Wildlife Sanctuary. We started at 11:30. It's almost 2 hours. I think we have covered more than 50% of the route. It started raining. While you are traveling towards Dudhsagar, you will enjoy the nature. You will enjoy the water streams passing by. You will enjoy the butterflies flying around, and the the greenery around. But at the back of the mind, you will always have a thought that by what time will you reach the Dudhsagar Falls? How much time will you spend there, and when you will start the return journey, and when you will reach back home? Because in our case, we had started late, and we were wondering if we will be in the darkness in the return journey, which we wanted to avoid. Almost 3.5 hours we are still walking, and our estimate is that another 30 to 40 minutes we will be at waterfall. थोड़ा फार दिसतोय waterfall. Finally 100 meters to waterfall. Oh damn.
guide said that he will take us to the edge of Chennai Express movie shop. There is a secret route to it. Finally, we have seen the waterfall, but the trek to Dudhsagar is not everyone's cup of tea. It requires almost 11 kilometers, around 4 hours of continuous walk through this kind of jungle. No network, no food, and continuous rains. So other option is wait till December. The jeep service will start after the rains are over. Come by a jeep. No need to walk to and fro. Okay.